आप हमारे बहुत ही खास पेशकश देख रहे हैं आउटलुक 2025। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं मिस्टर मनप्रीत गिल। ही इज चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड। वेलकम टू द शो मिस्टर गिल। Thank you, Gitu, for having me. Pleasure, sir. And I'll start with wishing you, your family, your team a very happy and prosperous 2025, sir. Thank you, and look, wishing yourself and your viewers a very happy new year. थैंक यू सो मच। सर, शुरुआत करते हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में हम कामकाज कर रहे हैं। अगर हम अपने बाजारों को देखें, इंडियन मार्केट्स को भी, द 2024 वाज क्वाइट अ बम्पी राइड फॉर equities. Looking at the scenario now, sir, the macro environment in which we are operating, आपको emerging markets में इंडिया की placement कैसे लगती है? How do you see India placed within the emerging markets with all these uncertainties still playing out? In our view, India एक बहुत अच्छी पोजीशन में है क्योंकि equity market राइट काफी बम्पी था जैसे आपने बोला, और अनसर्टेनिटीज रहेंगे। इन द यूएस ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सरकार 20 जनवरी को की शुरुआत होगी, और काफी क्वेश्चंस हैं कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन पर्टिकुलरली टैरिफ्स के साइड में किस फॉर्म और स्पीड में लेगी। लेकिन आवर व्यू में जो इंडिया का आउटलुक है, ग्रोथ के तौर पे सबसे ऑप्टिमिज्म है इन आवर व्यू एशियन मार्केट्स के बीच में। क्योंकि इफ यू लुक ईदर फ्रॉम एन इकोनॉमिक ग्रोथ पर्सपेक्टिव या फ्रॉम एन अर्निंग्स ग्रोथ पर्सपेक्टिव, चैलेंजेस रहेंगे, और कुछ रीसेंट डेटा में कुछ स्लोनेस आई है जो दिख रही है, लेकिन विजिबिलिटी सबसे अच्छी है, और रिलेटिव टर्म्स में इन आवर व्यू इंडिया का आउटलुक में स्टिल काफी ऑप्टिमिज्म है। और इस साल, जैसे आपने अनसर्टेनिटी, काफी अच्छा वर्ड चुना है कि अनसर्टेनिटी के दुनिया में जो रिलेटिव स्टेबिलिटी और ऑप्टिमिज्म इंडियन इकोनॉमी मार्केट्स में दिख रही है, फॉर मार्केट्स इन आवर व्यू दैट्स स्टिल अ ग्रेट आउटकम। इसलिए हमारा व्यू है इंडियन इक्विटीज पे, हम ओवरवेट व्यू है रिलेटिव टू एशिया, वो व्यू हम रख रहे हैं 2025 के लिए। We still think Indian markets can do better than a lot of Asian peers, with bumpiness. That I think is unavoidable. But हमारे व्यू में bumpiness is an opportunity. True, sir. अगर हम earnings की बात करें, so for last 2 quarters of FY25 have again we have seen moderation in earnings. Earnings में हमने moderation देखी। अब Q3 के numbers आना शुरू हो जाएंगे, और उम्मीद यही है कि ज़्यादा expectation इस बार भी नहीं रखनी चाहिए। So as far as the earnings are concerned, how do you see earnings playing out for Indian corporate sector in 2025 calendar year? See, I think from an absolute perspective, कुछ सॉफ्टनेस हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और ये हर साल होता है। हम साल के शुरुआत में ऑप्टिमिज्म काफी हाई होती है, अर्निंग एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है, एंड एज वी गो थ्रू द ईयर वो एक्सपेक्टेशंस थोड़े डाउनवर्डली रिवाइज्ड हो जाते हैं। दैट इज वेरी नॉर्मल। लेट्स आल्सो नॉट फॉरगेट कि पिछले 2 साल में वीव हैड some bumpiness, but actually quite a lot of strong economic growth, some decent earnings growth as well. So some normalization, some slowness from that, हमारे व्यू में should be as part of normalization. But from an earnings perspective, look, as long as we get earnings growth that is uh, approaching sort of high single digit या low double digit, equity market के लिए that can be enough. क्योंकि हमारा गोल यही है कि is that higher than जो दूसरे एशियन मार्केट्स में मिल सकती है, दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में, इज दैट हायर देन जो बॉन्ड मार्केट में मिल सकती है बॉन्ड यील्ड पर्सपेक्टिव से। सो डिबेट तो अर्निंग्स आउटलुक पे रहेगा, पर वो जो अर्निंग्स का लेवल है, एक्सपेक्टेशंस है, वो हमारे व्यू में स्टिल काफी हाई है, इवन इफ वी गेट सम स्लोनेस अराउंड द एजेस। मिस्टर गिल, आपने बॉन्ड मार्केट की बात की। हाउ शुड वन अप्रोच बॉन्ड मार्केट इन 2025? क्योंकि यील्ड्स को अगर देखें तो यील्ड अभी भी यूएस में इट्स 4% प्लस, और इंडियन मार्केट में भी यील्ड ऑन अ हायर साइड है। हालांकि फेड ने 75 बेसिस पॉइंट की कटौती तो की है, एंड बट दे हैव टेम्ड डाउन देयर कट्स फॉर 2025, saying that instead of 4 they'll go for 2 cuts only. इंडिया में अभी तक इंटरेस्ट रेट रिवर्सल तो नहीं है। इन्फ्लेशन इज अंडर has been contained to some extent, but food inflation is eating up. तो ऐसे सिनेरियो में हाउ डू यू सी बॉन्ड मार्केट्स परफॉर्मिंग, एंड अगर एक रिटेल इन्वेस्टर को अप्रोच करना हो बॉन्ड मार्केट में, तो कैसे करना चाहिए? जी, हमारे व्यू में बॉन्ड्स प्ले 2 रोल्स एक पोर्टफोलियो में। एक तो है डाइवर्सिफायर, क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट्स कुछ वॉलेटिलिटी हो, कुछ अनसर्टेनिटी हो, तो बॉन्ड्स कैन प्ले दैट रोल ऑफ अ डैम्पनर।
हम्म, सेकंड एंड मोर इम्पोर्टेंटली इज हमारे व्यू में इक्विटीज सॉरी बॉन्ड्स एक जो हम कहते हैं कोर होल्डिंग हमारे व्यू में एक सोर्स ऑफ इनकम वो सबसे अट्रैक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है बॉन्ड्स में, क्योंकि जैसे आपने ठीक बोला था, अगर हमारे व्यू में फेड अभी भी रेट को कट कर सकते हैं 2-3 बार, और हम्म, आरबीआई परहैप्स नॉट एज मच, दैट शुड बी गुड फॉर बॉन्ड्स। बट दूसरे साइड पे इन्फ्लेशन का रिस्क इज ऑलवेज देयर, एंड इनफैक्ट अगर आप यूएस इकोनॉमी में जो देखो, अगर ट्रम्प के गवर्नेंस के अंदर ग्रोथ आउटलुक इंप्रूव होता है, हम्म, द फ्लिप साइड ऑफ दैट इज कि वो इन्फ्लेशन पे अपवर्ड प्रेशर फिर से लगा सकता है, तो रेट कट्स एंड बॉन्ड यील्ड्स में नॉट गो डाउन एज मच। बट अगर हम्म, गोल हियर है कि इनकम लॉक इन करने के लिए, वी स्टिल थिंक दैट्स अ गुड टाइम टू लॉक इन इनकम इन बॉन्ड्स, वेदर दैट्स इन इंडिया रुपी बॉन्ड्स में या यूएस डॉलर बॉन्ड्स में, जो भी गोल है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं बॉन्ड्स वर्सेस इक्विटीज, और उसके उस कंपैरिजन में वी स्टिल थिंक इक्विटीज में रिटर्न्स ज्यादा होंगे, ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ। लेकिन जो दूसरा में कॉन्वर्सेशन है पर्टिकुलरली रिटेल के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो है कि कैश में रहना चाहिए या बॉन्ड्स में। और एक दुनिया में जहां सेंट्रल बैंक्स या तो रेट्स को फ्लैट रख रहे हैं या कट कर रहे हैं, हमारे व्यू में जो बॉन्ड्स में अपॉर्चुनिटी है वो है इनकम को लॉक इन करने के लिए अगले 2-3-5 साल के लिए। कैश में जो मेन रिस्क है कि लोग, अगर रेट कट्स ना आए तो कैश के रिटर्न्स भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर रेट कट्स आ जाए तो फिर विद कैश यू आर लेफ्ट अनप्रिपेयर्ड। मिस्टर गिल, हाउ डू यू सी स्ट्रेंथ ऑफ डॉलर? आई मीन, अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो 108 के ऊपर भी चला गया था, थोड़ा बहुत नीचे तो आया है, पर इट्स स्टिल होल्डिंग अप। ट्रम्प के टेन्योर के बीच अगर देखें तो कैन वी एक्सपेक्ट द डॉलर टू स्टे एट दीज लेवल्स ओनली, या फिर आपको लगता है इट्स टॉपिंग आउट? इन आवर व्यू जो डॉलर है, वी थिंक इट विल बी रेंज में रहेगा, लेकिन जो रेंज डॉलर में द डॉलर इंडेक्स है स्टेट पिछले 2 साल में रेंज ऑफ अबाउट 100 to 106, हमारे व्यू में अब रेंज वो थोड़ा सा ऊपर को शिफ्ट हो गया है। ओके, एंड our व्यू इसलिए है क्योंकि लुक टुडे डॉलर स्ट्रेंथ जो जो दिख रहा है हमारे व्यू में, वो कंसर्न, वो एज अ रिजल्ट ऑफ कंसर्न इन्फ्लेशन साइड पे बॉन्ड यील्ड्स भी इन द यूएस थोड़े ऊपर जा रहे हैं, एंड आई थिंक राइट, ये कंसर्न रहेगा जब तक ट्रम्प की पॉलिसीज में क्लैरिटी नहीं आएगी, तो कुछ हफ्ते और। टैरिफ्स में पॉलिसी क्लैरिटी वो भी एक कंसर्न है जो डॉलर को ऊपर पुश कर रहा है। लेकिन इन आवर व्यू दैट यू नो upward pressure will top out as we see greater clarity on, when we say tariff का जो डर है वो कितना exactly implement होगा, किस स्पीड पे implement होगा, वो important conversation है। अब जो इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज है, एक्चुअली डॉलर सबसे इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ टॉपिक है, क्योंकि हम इंडियन इक्विटीज की अर्निंग्स आउटलुक डिबेट कर सकते हैं, हम वैल्यूएशन डिबेट कर सकते हैं, लेकिन अगर या तो इंडियन इक्विटीज या इमर्जिंग मार्केट्स मोर ब्रॉडली, फॉरेन इन्वेस्टर के व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्चुअली है और इंपॉर्टेंट ड्राइवर है, एक है यूएस डॉलर। राइट, तो जो डाउनवर्ड प्रेशर हम अभी पिछले कुछ हफ्तों में देख रहे हैं, हमारे व्यू में वो डॉलर स्ट्रेंथ का रिजल्ट है, लेकिन अगर हम डॉलर को थोड़ा टॉपिंग आउट देखें अगले कुछ महीनों में, हमारे व्यू में रेंज में मूव टू द लोअर एंड, वो फॉरेन इन्वेस्टर फ्लो के लिए एक पॉजिटिव हो सकता है। एक और जो कंसर्न पूरी दुनिया को सता रहा है वो है आपके जियोपॉलिटिकल टेंशन, आपका यूक्रेन युद्ध और रशिया के बीच का युद्ध तो अभी जारी है, इट हैज़ बीन लोकलाइज्ड नाउ, रीजनलाइज्ड। और अगर मिडिल ईस्ट का टेंशन देखें तो यहाँ पे भी टेंशन के बीच में क्रूड ने कुछ ज़्यादा किया नहीं, इट्स स्टेड इन अ बैन। तो क्रूड हम क्या अपेक्षा करें, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज मोर डिपेंडेंट ऑन क्रूड बिकॉज वी इम्पोर्ट मोस्ट ऑफ इट। सो क्रूड के दामों को लेके आपका क्या नजरिया बन रहा है इस समय? नहीं, हमारे व्यू में इंडिया के लिए पर्टिकुलरली एक सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि हम इन आवर व्यू जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो प्राइसेस काफी कैप्ड रहेंगे, इफ एनीथिंग रिस्क है कि हम प्राइसेस यहाँ से और भी नीचे जाएं। और इसका रीजन यही है कि अगर आप डिमांड सप्लाई का व्यू देखें, पूरी दुनिया में सप्लाई, ऑयल की सप्लाई काफी ज्यादा है और ग्लोबली डिमांड ग्रोथ काफी सॉफ्ट है। एंड जो जियोपॉलिटिक्स है, लोग जियोपॉलिटिक्स तो is always present. If in fact, in our view, that is going to be, if anything, more and more present. So अब newspaper headline पढ़ेंगे geopolitics तो will be the primary sort of factor. लेकिन for us, what is more important is कि वो जो geopolitics headlines है, क्या वो markets पे impact होगा, या तो stock bond markets पे या ऑयल प्राइसेस पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड एक्चुअली पिछले 40-50 साल देखें, जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स है उनका इम्पैक्ट मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स पे जनरली काफी लिमिटेड होता है। जो एक्सेप्शन होते हैं वो, दैट इज दोज आर द ओनली वंस वेयर जियोपॉलिटिक्स impacts the supply or demand of a key commodity like oil.
अब 2022 यूक्रेन वॉर में हमने देखा था कि नेचुरल गैस प्राइसेस पे एक इम्पैक्ट हुआ था और यूरोपियन मार्केट्स पे ऑब्वियसली इम्पैक्ट हुआ था। पर क्रूड ऑयल, मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स तो रिमेन्स सॉर्ट ऑफ एन अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन। बट द गुड न्यूज इज दैट ये जियोपॉलिटिकल एक टाइम पे आ रहा है जब डिमांड सप्लाई बैलेंस काफी supply side पे focused है. So even if we have some flashpoints, unless you tell me that there's going to be a big disruption of 30-40% of oil prices or oil supply worldwide, most other scenarios may, we still think oil prices, एक महीने का volatility spike हो सकता है, but beyond that, we still think prices will remain quite capped, or if anything, move a little lower. That's a good news for India because we are net importers और रुपए का जो weakness है that's also impacting us to some extent. Sir, अगर हम बात करें Indian markets की, we are already down nearly 10 to 11% from peak और हम जब इन levels के आसपास भी है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि हमारी valuations are still expensive as far as the other emerging markets are vis-a-vis the other emerging markets. तो valuations को लेके आप इंडिया में इन levels के आसपास जहां हम अभी कामकाज कर रहे हैं, are you comfortable or do you still feel that the markets should see sharp cuts? See, valuations may, I think the most important context is that जब in a rising market में valuations हमेशा on the higher side होती हैं. So higher elevated valuations by themselves are not necessarily a bad thing. So that वो तो एक चीज़ है. दूसरी बात ये है कि मैं ज़्यादा comparisons level पे ज़्यादा comparisons दूसरे emerging markets से I don't favor that only because India is always traded at a premium. So I think a better जो अच्छा comparison है कि Indian equity के market valuations Indian markets के history से compare करना चाहिए. और उस comparison पे लोग valuations undoubtedly थोड़े higher side पे हैं. अब पिछले जो market में correction हुई है वो valuations में भी कुछ corrections आए हैं. लेकिन जो important चीज़ यह है कि एक rising market में हमेशा पहले valuations rise होती है और फिर earnings delivery बाद में आती है. The most important question, of course, is will the earnings delivery come through? Right. That is actually the most important thing. Yeah. दूसरी, another way of looking at it is कि जो higher valuations हैं, are they justified? Is there a good reason? And in our view, again, Indian markets में, together with US markets में, valuations are justified. एक metric हम देखते हैं कि comparing प्राइस टू अर्निंग्स, वो तो एक कंपैरिजन है. दूसरा है लुकिंग एट प्राइस टू बुक वर्सेस रिटर्न ऑन इक्विटी. अब रिटर्न ऑन इक्विटी पे इंडियन और यूएस मार्केट्स जो पिक्चर दिखती है वो दिखती है कि यस वैल्यूएशंस थोड़े एलिवेटेड साइड पे हैं पर वो जस्टिफाइड है कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी हाई इसलिए वैल्यूएशंस ऑन द हायर साइड है. सो दैट इज व्हाई हमारे लिए एक एक फैक्टर मॉनिटर करने के लिए है, लेकिन इन आवर व्यू फोकस वापस अर्निंग्स पे चले जाता है कि वैल्यूएशंस राइजिंग मार्केट में ऊपर जानी चाहिए. दैट इज नॉर्मल इन एवरी साइकिल. जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इज द अर्निंग्स कमिंग थ्रू टू जस्टिफाई दैट वैल्यूएशंस. हमारे व्यू में द आंसर इज यस. वो ऑप्टिमिज्म है ग्रोथ साइड पे, बट इन आवर व्यू दैट इज द की फैक्टर टू मॉनिटर. मिस्टर गिल, अगर हम 2024 को देखें तो गोल्ड ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया. वी गॉट रिटर्न्स ऑफ अराउंड 24-25% एज फार एज द गोल्ड इज कंसर्न. तो इस बार में तो बेस्ट एलोकेशन स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? हाउ शुड यू प्लान योर एलोकेशन इन द ईयर 2025? तो गोल्ड, हम अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं. पिछले साल गोल्ड हमारे लिए की ओवरवेट था ग्लोबल ग्लोबल सॉर्ट ऑफ पोर्टफोलियोज में, और इस साल में 2025 में हमने वो ओवरवेट सॉर्ट ऑफ रखा है. विल लेफ्ट दैट इन प्लेस. लेकिन जैसे आपने बोला था पिछले साल परफॉर्मेंस गोल्ड में काफी बहुत ही स्ट्रांग थी. अब वो हर साल अनरियलिस्टिक है वो दैट सॉर्ट ऑफ रिटर्न टू एक्सपेक्ट दैट. बट इन आवर व्यू गोल्ड का रोल पोर्टफोलियो में अगेन एक तो डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं. आई थिंक एक तो लाइक बॉन्ड्स एक डाइवर्सिफायर. जैसे आपने जियोपॉलिटिक्स डिस्कस किया, अगर जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ गया तो गोल्ड कैन बी अ बफर जब इक्विटीज पे प्रेशर रहता है. दूसरी जब बात है जो इन्फ्लेशन की कॉन्वर्सेशन, बिकॉज अगर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ हमने इन्फ्लेशन का प्रेशर फिर से देखें तो देन एसेट्स लाइक गोल्ड, गोल्ड एक एसेट है लेकिन काफी दूसरे जो रियल एसेट्स हैं, कमोडिटीज हैं, वो भी मदद कर सकते हैं टू हेल्प बोल्स्टर पोर्टफोलियोज. तो हमारे व्यू में दो रोल्स ये दो रोल्स प्ले करते हैं. एंड दैट इज व्हाई हमारा जो ओवरवेट एटलीस्ट ग्लोबल पोर्टफोलियो में हमने रखा है. नाउ द अमाउंट इज इंपॉर्टेंट. ओवरवेट का मतलब नहीं कि इक्विटी साइज एलोकेशन. ज्यादा पोर्टफोलियो हम देखते हैं गोल्ड का एलोकेशन हम 5 से 7% तक रखते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक पोर्टफोलियो में हमारे व्यू में गोल्ड का एलोकेशन होना चाहिए.
और इमर्जिंग मार्केट्स में वेयर डज इंडिया स्टैंड इन योर allocations? So we mainly look at Asian equity markets, and at the moment it is our top-ranked emerging market. We have an overweight on Indian equities, in within Asia. And it comes back to जो बातें हमने डिस्कस थी। एक तो है इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे व्यू में इमर्जिंग मार्केट वर्ल्ड में इंडिया में ग्रोथ ऑप्टिमिज्म और ग्रोथ विजिबिलिटी दोनों साइड में इंडिया में द पिक्चर लुक्स बेटर देन एल्सवेयर। एंड yes, valuations obviously are a concern है, लेकिन हमारे व्यू में so far that has not been a constraint, and as long as earnings delivery, growth delivery continues, we don't see that being a constraint. I think that is of course the big risk to monitor as well, but it comes back to earnings front and center. My last question, any themes that you see playing out in 2025, new themes, or you would say traditional themes only? So ज़्यादा we don't think in much in terms of big picture themes. I think the big one जो बिल्कुल हमारे सामने है is Trump's election, and I think the uncertainty that brings with it. In fact, 2025 का हमारा market outlook का theme है playing your Trump card, Okay. क्योंकि we think that is perhaps going to be the biggest near-term influence on markets. क्योंकि ट्रम्प का पॉलिसी लोग हम सब ने सुना है कि उनका पॉलिसी प्लेटफॉर्म क्या है, बिजनेस के लिए फ्रेंडली है, लेकिन उनकी टैरिफ पॉलिसी है, फिस्कल यूएस गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट करने की है। द की क्वेश्चन इज कि किस स्पीड से ये सब इंप्लीमेंट होगा, किस ऑर्डर में इंप्लीमेंट होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मार्केट्स। तो हमारे व्यू में द अल्टीमेट डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव with some bumpiness and volatility. लेकिन that to us playing your trump card using जो volatility है, uncertainty to your advantage by using pullbacks to add, वो हमारे लिए really is the key theme. Mr. Gill, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। Thank you so much for your time, sir. Thank you very much. Thank you, sir.